1 legion. जिम गफीर बड़ी तादाद में. A division of 3,000 to 6,000 men including a complement of cavalry. 2 adept, adjective. इंतहाई माहिर. Very skilled or proficient at something. 3 upheaval, noun. खलबली, इनकलाब अजीम, हलचल. A violent or sudden change or disruption to something. 4 catastrophe, noun. आफत, अलमिया, सानिहा. An event causing great and usually sudden damage or suffering, a disaster. 5 wreak, verb. बर्बादी, बदला लेना, इंतकाम लेना. Cause a large amount of damage or harm. 6 devastation, noun. तबाही, वीरानी. Great destruction or damage. 7 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 8 deleterious, adjective. नुकसानदेह, मुहलिक, मुज़िर. Causing harm or damage. 9 exacerbated. मर्ज़ में शिद्दत पैदा करना. To make something that is already bad even worse. 10 sober, verb. होशमंद, सूफी, संजीदा. Make or become sober after drinking alcohol. 11 invective, noun. दुश्मनामेज़, गाली गलो. Insulting, abusive, or highly critical language. 12 rhetoric, noun. शौकत अल्फाज, लिसानी, इल्म बयान. The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. 13 inflammatory, adjective. सुर्खी, सोजिश, आतिशज़नी. Relating to or causing inflammation of a part of the body. 14 partisan, noun. कट्टर, सख्तगीर, हामी. A strong supporter of a party, cause, or person. 15 virulent, adjective. जहरीला. Of a disease or poison, extremely severe or harmful in its effects. 16 neutrality, noun. अलहदगी, गैर जानिबदारी. The state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, etc., impartiality. 17 precarious, adjective. गैर मुस्तहकम, रियायती, अर्जना. Not securely held or in position, dangerously likely to fall or collapse. 18 precipitous, adjective. जल्द अमल, तेजी सी, जल्दबाज. Dangerously high or steep. 19 erosion, noun. फरसूदगी, गिरावट, कटा, मिट जाना. The process of eroding or being eroded by wind, water, or other natural agents. 20 simultaneous, adjective. बैक वक्त, एक साथ, एक ही वक्त में. Occurring, operating, or done at the same time. The Shahbaz Sharif-led coalition will complete a year in government next month. What has this period meant for the country? How has it shaped politics and affected governance? For a start, the ruling coalition has little to show by way of improved governance. It has instead been defined by its bloated cabinet, the largest in the country's history. The appointment of a legion of ministers and special assistants, that too for a short duration government and many without portfolio, had little to do with the needs of governance but everything to do with rewarding friends and allies for their political support. The ruling coalition has lacked any policy aim or direction. It has been a rudderless affair for much of the past year, with Sharif unable to make the transition from a provincial to a national leader adept at running federal affairs. His modest communication skills also laid bare his limitations, while his previous reputation as a doer has not been in evidence during his premiership. Instead, decision-making has been marked by vacillation and dithering, most consequentially on the economic front.
The change of finance ministers a few months into the government's tenure came at a heavy price: delay in the IMF's loan program. This compounded the economic crisis and drove the economy to the brink. Meanwhile, PMLN's main alliance partner in government, the PPP, purposefully showed no interest in economic policy in an obvious effort to distance itself from the tough, unpopular economic measures the PDM government was obliged to take for a fund bailout. For PMLN, its failure, despite several efforts, to gain control of the Punjab government, until the Provincial Assembly's dissolution in January, was one of its biggest political setbacks. Its poor performance in a series of by-elections in Punjab demonstrated that its position in its traditional and only provincial stronghold had dramatically weakened. Beyond these setbacks and the PDM government's underperformance, what did this period mean for the country's politics? An overarching aspect of these months of political crisis, natural disaster, and upheaval was the deepening polarization in the country. When calamities strike, they usually unite nations. But the worst floods in the country's history did not persuade political rivals to temporarily cease their squabbles and offer a unified response to the catastrophe. Politics was back to business as usual save for a few days after the deadly monsoon began to wreak unprecedented devastation across the country. With opposition leader Imran Khan on the warpath, no effort was made by either side to ease tensions then, or later. The intensifying confrontation between the government and opposition kept the country in an unsettled state of uncertainty, with deleterious consequences for an economy in the critical ward. The PDM government seemed directionless and its dithering exacerbated the economic crisis. Another aspect of the post-April 2022 period was the absence of any serious or sober debate among political parties on the multiple challenges facing the country. In fact, a new normal took hold in the political culture. Argument was replaced by invective, and civility by toxic rhetoric as the political discourse plunged to an unprecedented low. Political rivals daily exchanged inflammatory statements as if engaged in a terminal conflict. This obviated any meaningful discussion of policy issues, much less generated solutions to the country's problems. Another unfortunate trend in this period was that state institutions became the target of partisan attacks in the raging political battle. Criticism of the Election Commission of Pakistan (ECP) by Khan and his party was frequent and virulent, with the chief election commissioner being constantly asked to resign. PMLN leaders, for their part, often taunted President Arif Alvi for compromising his office's neutrality. The senior judiciary was criticized at different times by all the major parties. This was an inevitable consequence of party leaders taking their political disputes to the court and then assailing courts when decisions didn't go their way. The military establishment too came under unprecedented pressure and faced mounting criticism from political leaders for either intervening in the political game or not intervening on their side. Whether it was the establishment, judiciary, or ECP, if their decisions or actions were seen as favorable for a political party, they were applauded. When the opposite happened, they were accused of being biased. The most consequential development in this period was the deteriorating state of the economy and the inability of the PDM government to manage the situation competently. While the economic crisis was the cumulative result of years of dysfunctional economic policies, mismanagement of public finances, and political instability, the government's dithering and indecision exacerbated the crisis. Foreign exchange reserves dwindled to a precarious level, inflation soared to a 50-year high, the rupee lost record value against the dollar, exports fell, and remittances from overseas workers declined. With foreign debt at a record high and the external financing gap unbridgeable in the absence of new inflows, the risk grew of a sovereign default. International rating agencies downgraded Pakistan's credit rating to junk status, highlighting the high level of default risk. Assurances by the finance minister of having the situation under control were increasingly discounted by the market and business community. His frequent public references to the fund for being unfair, unreasonable, and acting abnormally hardly had a calming impact on nervous markets. Meanwhile,
procrastination over prior actions needed to conclude the agreement with the IMF came at an increasing cost to the economy. This was reflected in depleting reserves, falling exports, and the precipitous erosion of market confidence. The fund's insistence on undertaking all reforms as prior actions had much to do with the lack of confidence in the government's economic managers. 1 year of PDM rule has been a lost opportunity in many ways, but also in the lack of effort made to forge a consensus on an agreed date for simultaneous provincial and national elections. Notwithstanding Khan's inflexibility, it was the government's responsibility to try to evolve such an agreement to calm down the situation and end the uncertainty. In the absence of this, the country's political and economic future appears more troubled than ever. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, March 13, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद आइंदा माह हुकूमत को 1 साल मुकम्मल करेगा। इस दौर का मुल्क के लिए क्या मतलब है? इसने सियासत को किस तरह तश्कील दिया है और हुक्मरानी को किस तरह मुतासिर किया है? शुरू में हुक्मरान इत्तेहाद के पास बेहतर तर्ज हुक्मरानी के जरिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसके बजाय इसकी तारीफ इसकी फूली हुई काबीना ने की है, जो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वज़रा और मावनीन खुसूसी के एक लश्कर की तकर्रुरी, वो भी कलील मुद्दती हुकूमत के लिए, और बहुत से बगैर कलमदान के का हुक्मरानी की ज़रूरियात से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि हर चीज़ का ताल्लुक दोस्तों और इत्तेहादियों को उनकी सियासी हिमायत पर इनाम देने से था। हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई पॉलिसी मकसदा समत नहीं है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ये एक गैर मामूली मामला रहा है और नवाज शरीफ वफाकी मामलात चलाने में महारत रखने वाले एक सूबाई से कौमी रहनुमा बनने में नाकाम रहे हैं। उनकी मामूली बातचीत की महारत ने भी उनकी हुदूद को ख़त्म कर दिया, जबकि एक करने वाले के तौर पर उनकी साबिक़ा साख उनके वज़ीर आज़म के दौर में साबित नहीं हुई। इसके बजाय फैसला साजी में बेचैनी और बेतरतीबी की निशानदेही की गई है, जिसके नतीजे में माशी महाज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हुकूमत की मुद्दतकार के चंद माह बाद वज़राए ख़जाना की तब्दीली की भारी कीमत चुकानी पड़ी, यानी IMF के कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर। इसने माशी बहरान को मज़ीद पेचीदा बना दिया और मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दरियासना हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने माशी पॉलिसी में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और PDM हुकूमत को फंड बेल आउट के लिए उठाए जाने वाले सख्त और गैर मकबूल माशी इक़दामात से खुद को दूर रखने की वाज़ेह कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के लिए कई कोशिशों के बावजूद पंजाब हुकूमत का कंट्रोल हासिल करने में नाकामी जनवरी में सूबाई असेंबली की तहलील तक इसके सबसे बड़े सियासी झटकों में से एक थी। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में उसकी नाकिस कारकर्दगी से जाहिर होता है कि इसके रिवायती और वाहिद सूबाई गढ़ में उसकी पोजीशन ड्रामाई तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। इन नाकामियों और PDM हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के अलावा इस दौर का मुल्की सियासत के लिए क्या मतलब था? सियासी बहरान, कुदरती आफात और अफरातफरी के इन महीनों का एक अहम पहलू मुल्क में बढ़ता हुआ पोलराइजेशन था। जब आफत आती है तो वो आम तौर पर कौमों को मुत्तहिद करती है, लेकिन मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने सियासी हरीफों को आर्जी तौर पर अपने झगड़ों को ख़त्म करने और तबाही का मुत्तहिदा जवाब पेश करने पर आमादा नहीं किया। मुहलिक मानसून के मुल्क भर में गैर मामूली तबाही मचाने के कुछ दिनों के बाद सियासत मामूल के मुताबिक बहाल हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा इमरान खान के जंगी रास्ते पर होने की वजह से दोनों फरीकों की जानिब से इस वक्त आबाद में कशीदगी को कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान बढ़ती हुई महाज आराई ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया, जिसके नाजुक दौर में मईशत के लिए नुकसानदेह नताइज बरामद हुए। PDM की हुकूमत बेसमत दिखाई दे रही थी और उसकी हिट धर्मी ने माशी बहरान को मजीद बढ़ा दिया। अप्रैल 2022 के बाद के दौर का एक और पहलू ये था कि मुल्क को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजों पर सियासी जमातों के दरमियान कोई संजीदा बहस नहीं हुई। दर हकीकत सियासी कल्चर में एक न्यू नॉर्मल ने जगह बना ली।
इस्तेदलाल की जगह इश्तियाल अंगेजी ने ले ली और तहजीब की जगह जहरीले बयानबाजी ने ले ली, क्योंकि सियासी गुफ्तगू गैर मामूली हद तक गिर गई थी। सियासी मुखालिफिन रोज़ाना इश्तियाल अंगेज बयानात का तबादला करते थे, जैसे किसी टर्मिनल तनाज़ा में मुलव्वस हों। इससे पॉलिसी के मसाइल पर कोई बामानी बहस नहीं हुई और मुल्क के मसाइल के हल बहुत कम पैदा हुए। इस दौर में एक और अफसोसनाक रुझान ये था कि रियासती इदारे सियासी जंग में जानिबदाराना हमलों का निशाना बन गए। इमरान खान और उनकी जमात की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) पर तनकीद अक्सर व बेशतर होती रही और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुसलसल इस्तीफे के लिए कहा जाता रहा। मुस्लिम लीग (नून) के रहनुमा अक्सर सदर आरिफ अलवी पर तंज करते थे कि वो अपने ओहदे की गैर जानिबदारी पर समझौता करते हैं। तमाम बड़ी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ औकात में सीनियर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये इस बात का नागुज़ीर नतीजा था कि पार्टी रहनुमा अपने सियासी तनाज़ात को अदालत में ले जाते हैं और फिर जब फैसले उनके मुताबिक नहीं होते तो अदालतों को बंद कर देते हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी गैर मामूली दबाव का शिकार हो गई और सियासी रहनुमाओं की जानिब से सियासी खेल में मुदाखलत करने या उनकी तरफ से मुदाखलत न करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो या इलेक्शन कमीशन, अगर उनके फैसले इक़दामात किसी सियासी जमात के लिए साजगार नजर आते थे तो उनकी तारीफ की जाती थी। जब इसके बरक्स हुआ तो उन पर मुतअस्सिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस अरसे में सबसे अहम पेशरफ्त मईशत की बिगड़ती हुई हालत और PDM हुकूमत की सूरत हाल को मुअस्सर तरीके से संभालने में नाकामी थी। अगरचे माशी बहरान बरसों की नाकारा माशी पॉलिसियों, अवामी मालियात की बदइंतज़ामी और सियासी अदम इस्तेहकाम का मजमूई नतीजा था, लेकिन हुकूमत की हिटधर्मी और अदम फैसले ने बहरान को मजीद बढ़ा दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर गैर यकीनी सतह पर आ गए। इफ़रात ज़र 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई। बरामदात में कमी और गैर मुल्की कारकुनों की तरसीलात ज़र में कमी वाक़ हुई। गैर मुल्की कर्जों की बुलंद तरीन सतह पर होने और नए सरमायाकारी की अदम मौजूदगी में बैरूनी फिनांसिंग के खला को पर न करने की वजह से खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को कम करके जंग स्टेटस कर दिया है, जिससे डिफ़ॉल्ट रिस्क की बुलंद सतह को उजागर किया गया है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से सूरत हाल को काबू में रखने की यकीन दहानियों को मार्केट और कारोबारी बरादरी की जानिब से तेज़ी से नज़रअंदाज किया गया। फंड को गैर मुनसिफाना, गैर माकूल और गैर मामूली तौर पर काम करने के लिए उनके बार बार अवामी हवालाजात ने आसाबी मार्केटों पर शायद ही पुरसुकून असर डाला। दरियासना IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी पेशगी इक़दामात में ताख़ीर की वजह से मईशत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसकी अक्कासी ज़खायर में कमी, गिरती हुई बरामदात और मार्केट के एतमाद में कमी से होती है। फंड की जानिब से तमाम इस्लाहात को पेशगी इक़दामात के तौर पर शुरू करने पर इसरार का हुकूमत के माशी मैनेजर्स पर एतमाद की कमी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। PDM की हुकूमत का एक साल कई हवालों से मौका गंवा चुका है, लेकिन सूबाई और कौमी इंतखाबात एक साथ कराने की मुतफ़िक़ा तारीख़ पर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशों की कमी की वजह से भी खान की लचक के बावजूद ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो सूरत हाल को पुरसुकून करने और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इस तरह के मुआहदे को तैयार करने की कोशिश करे। इसकी अदम मौजूदगी में मुल्क का सियासी और माशी मुस्तक़बिल पहले से कहीं ज़्यादा परेशान कुन दिखाई देता है। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 13 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.